ductile material. First, what is stress? Stress is equal to load per unit area. It is also known as resistance offered to formation. It is internal to material or object, and it is for equilibrium condition just equal the load applied on the material. That's why the reason we write the formula load upon area. Now, what is the strain? Strain means when we applied a load on an object, then it gets deformed. The rate with respect to the initial position it gets deformed is known as strain, or we can say the ratio of change in dimensions divided by initial dimensions. If we are considering we have a rod and its length is L, and we've applied a force, fixed one end and applied a force F over here. As a result of that, it elongates by a certain amount, say delta L. Then the value is, we can write as strain epsilon is equal to, it is denoted by epsilon, is equal to delta L, the change in dimension divided by initial dimension. It is known as strain. Now once again I go for stress for deriving the unit of stress. Here, because in strain both the units are common for numerator and denominator, it is a dimensionless quantity. For this reason, Ksa is a dimensionless quantity. Now, for stress, it is load upon area. Now, unit of load is Newton and unit of area is meter square. Unit per meter square. For this, we have a law that is known as Hooke's law, which provide a relation between stress and strain. According to Hooke's law, stress, that is denoted by sigma, directly proportional to the strain, that is epsilon. If we remove this proportionality constant, then we have sigma is equal to E epsilon, or we can write as sigma is equal to E sigma is equal to E delta L upon L, or we can also write as, if we put the value of load upon area, that is the load 4F upon A is equal to E delta L upon L. With the help of this relation, with the help of Hooke's law, we can find the value of change in dimension on application of force force F. Delta L can be write as F L multiplied by or divided by E A, where E is the Young modulus of elasticity. E is known as the proportionality constant, is known as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Now, for E, unit of Young modulus of elasticity, from Hooke's law we have F upon A is equal to delta L upon L multiplied by E, or we can write as E is equal to F upon A into L upon delta L. These two things had no identity, or we say don't have any
dimensions. That means E has the same dimension as the stress Newton per meter square. Okay, E have the same value as the value of delta or as the value of stress. Now we will move to the next thing. The stress and strain diagram for ductile material. डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जिसके ऊपर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म होके वायर फॉर्मेशंस में मदद करता है या इजीली वायर फॉर्म. लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A, L मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मीटर, like this. This is a block of mild steel. It is under tensile loading. Force F. Here another force F. We had applied a tensile load of a rod length L. Its cross-sectional area. I draw like this, three-dimensional figure for this. This is the cross-sectional area. On application of load, this rod will enlarge, size will increase. Now, if we plot a curve between the strain or deformation produced because of force applied, then we have a curve that is known as stress strain diagram. Very important diagram for point of view of mechanical properties. Here I kept two axes, y-axis and x-axis. On x-axis we have a strain, it's epsilon, or on y-axis we have a stress, that is sigma in Newton per meter. Initially, from the Hooke's law, stress is from the Hooke's law. खोल के बता. चाबी से बंद करो, खोलो गाड़ी. From Hooke's law, stress is directly proportional to strain. From this relation we have sigma is equal to E epsilon. If we closely observe this equation, it is the equation of a line. देखिए line की equation y is equal to mx which passed through a origin. Initially, up to which the material followed the proportionality law or Hooke's law. As we increase the force, initially the stress is 0, strain is 0. As we increase the force on material, it gets started deform. But what we observe, the deformation जो यहाँ पर हो रहा है, वो एक particular rate पर हो रहा है. Deformation take place on particular rate. ये जो deformation ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने अगर F force लगाया तो उसके correspondingly deformation delta L produce हुआ, या फिर sigma stress दिया तो उसके corresponding ही उसी ratio में epsilon produce हुआ. ठीक है. As a result we will have a straight line. और इस पे एक और चीज है, जब तक ये straight line आ रही है मटेरियल में elasticity भी रहेगी. Elasticity का मतलब ये जो मैंने लाइन करी है, initially I had apply a force F1, then sigma 2, you can say sigma 1, sigma 2, sigma 3. हम force stress बढ़ाते जा रहे हैं, तो force बढ़ाते जा रहे हैं. Correspondingly हमारे पास epsilon 1, epsilon 2 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है. But इस
पर्टिकुलर पॉइंट तक जब तक इलास्टिसिटी फॉलो करती है, इफ आई रिमूव एनी स्ट्रेस और फोर्स, मटेरियल विल हैव रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दैट्स व्हाई द रीजन इट इज नोन एज इलास्टिसिटी लिमिट, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। इसके बाद मटेरियल थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर का हो जाए, मतलब हम जब इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं वो प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन नहीं होगा, मतलब आप जब भी छोड़ेंगे देयर मस्ट बी सम, यहाँ तक का जोन जो कहलाता है, ये जो पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ड्रॉ ये हमारा कहलाएगा इलास्टिक जोन। बियॉन्ड दिस इलास्टिक जोन पूरा की पूरा क्या है, प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का मतलब हम जब भी स्ट्रेस हटाएंगे हमारे पास कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हमेशा बना रहेगा। बियॉन्ड दिस इलास्टिक, so at point O, this is our point A, so from point O to A is elastic zone और इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है, या इलास्टिसिटी मटेरियल शो कर रहा है। नाउ फर्दर टू दिस, जब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, मटेरियल प्लास्टिक जोन में आ गया है। मटेरियल की आफ्टर प्लास्टिक जोन में आने के बाद हमें दो पॉइंट मिलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड। जब हम इसके ऊपर एक्सपेंशन कर रहे थे, लोड लगा रहे थे, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला, पॉइंट बी, अप टू विच मटेरियल का यील्डिंग तेज हो जाता है। यहाँ से आपका पॉइंट यील्ड काफी से हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिफॉर्मेशन रेट बढ़ चुका है। पॉइंट बी के बाद ऐसी स्थिति आती है कि वी नॉट नीड टू एक्स्ट्रा फोर्स ओवर हियर, हमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता और हमें एक सडन ड्रॉप इन स्ट्रेस लेवल मिलता है और एक सर्टेन अमाउंट पे भी सेम स्ट्रेन बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी इज अपर yield point, point C is lower। यहाँ से फिर मटेरियल के अंदर फर्दर स्ट्रेस लगाने पे थोड़ा सा आपको एक वाइब्रेशनल जोन मिलता है। देन फर्दर आपको पॉइंट D से स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ना चालू है और एक हम टॉप पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, that is point E। आफ्टर पॉइंट E मटेरियल के अंदर नेकिंग चालू हो जाती है, मींस आपका जो रॉड है वो एक सेंटर पार्ट से छोटा होना चालू हो जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। नेकिंग का मतलब क्या होता है, आपकी जो रॉड है जब आप उस पर लोड लगाएंगे, लोड लगाने पे कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक से सेंटर पार्ट में से नीचे हो जाता है, जैसे गर्दन जो बोलते हैं नेक, और फाइनली एक पॉइंट पे जाके ये फ्रैक्चर हो जाता है, मींस ये दो पार्ट में टूट जाए। और जब ये दो पार्ट में टूटता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, यहाँ पर कप एंड कोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी कोई डक्टाइल मटेरियल टूटता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है कप एंड कोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन हम बोलते हैं या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये अपर यील्ड पॉइंट, तो अपर यील्ड स्ट्रेस हमें मिल जाता है, यहाँ पे लोअर यील्ड स्ट्रेस हमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने इतनी सारी चीजें देख ली तो इसके करस्पॉन्डिंग अब ये ग्राफ क्या शो करता है, एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट द एनर्जी एब्सॉर्ब energy absorbed up to fracture। तो टोटल एरिया है, ये क्या दिखाता है, मटेरियल ने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी, मटेरियल ने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी। इज इट क्लियर? अब अगर हम इसी एनर्जी एब्सॉर्ब को
हमने जो एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, इसी एनर्जी एब्जॉर्ब को अगर हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं अप टू द इलास्टिक लिमिट, एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन द इलास्टिक लिमिट, इट इज नोन एज टफनेस, को हम रिप्रेजेंट करते हैं टफनेस। और अगर मैं बोलूं टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, तो इट इज नोन एज रेजिलियंस। बेसिकली टफनेस क्या होती है? टफनेस इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। These are some basic things about the stress strain diagram of mild steel which you have to know. Okay, thank you.